तो क्या सीन है गाइस, डे 9 में आपका स्वागत है। 15 डे स्मार्ट मनी कंसेप्ट चैलेंज। अगर आपने डे 8 देखा होगा तो आपको एफवीजी याद होगा। वो जोन जहां प्राइस वापस आती है, वहां पे प्राइस फील करती है और फिर वापस मूव करती है। ठीक है, इट इज अ सिंपल एंड पावरफुल। तो आज हम उसका एडवांस्ड वर्जन देखेंगे जो कि है इनवर्स एफवीजी। ओके। सो और ये कंसेप्ट तब काम आती है जब एफवीजी फेल हो जाता है, जब प्राइस एफवीजी जोन में एंट्री करता है लेकिन रिवर्स नहीं होता बल्कि स्ट्रेट थ्रू ब्रेक कर जाता है। मतलब वो एक रिवर्सल नहीं होता है, कंटिन्यूएशन ट्रेंड में जाता है। सो आज हम कवर करेंगे आईएफवीजी एग्जैक्टली क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, और इनवर्स फेयर वैल्यू गैप एंट्री मॉडल हम आज स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ठीक है। So what makes an FVG becomes an IFVG? Bullish in inverse fair value gap versus bearish in fair value gap. Why IFVG shows market shift, fair value gap versus inverse fair value gap key difference, and inverse fair value gap entry model step by step. Okay. So inverse fair value gap. What is an inverse fair value gap? Fair value gap that gets broken flips the direction. ओके। फेयर वैल्यू गैप में क्या रहता था, हम एक अगर ट्रेंड के रिवर्सल में ट्रेड देखते थे। ठीक है, ट्रेंड के रिवर्सल में नहीं, सॉरी, मतलब एक रिट्रेसमेंट में। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, व्हेन प्राइस एंटर्स एसपीजी जोन बट इंस्टेड ऑफ रिवर्सिंग it breaks through it completely, that SVG is now invalidated and becomes an IFVG. Okay. So old zones becomes new zone in opposite direction. The failed SVG zone now act as a resistance if it was a support, or support if it was a resistance. Okay. So same zone, opposite function. Inverse fair value gap is smart money changing direction. When an FVG fails, it means institutional money has shifted, the market is reversing. So IFVG is one of the highest conviction setup in SMC. So fair value gap is a continuation. Okay, FVG holds when price returns to it. मैंने आपको बताया कि वो एक रिट्रेसमेंट रहता है। ठीक है। So price enters FVG, rejects, continues the trend. Okay, so it just come for retracement and it continues the trend. If it is a bullish, then it will go upwards. If it is a bearish, then it will take rejection above, and then again it will continue the trend. So user for trend continuation trends. Enter when price enters the FVG zone. Stop loss beyond FVG. Target next liquidity. Okay. So IFVG reversal. Fair value gap fails. Price breaks straight through it. Old bullish fair value gap becomes bearish inverse fair value gap. So used for trend reversal or shift trades. Enter when price retests from the other side. The flip is confirmation that direction changed. So fair value gap. Entry in direction of imbalance. Inverse fair value gap is equal to entry in opposite direction after fair value gap is failed. Okay. So inverse fair value gap entry model step by step. So step one, identify an existing fair value gap on your chart. Mark the FVG zone clearly. Note whether it's bullish or bearish. This is the zone you will watch the flip. Step 2. Watch the price to break through the fair value gap. Instead of respecting the fair value gap, price aggressively pushes through it with momentum. Fair value gap is now invalid. Okay. So step 3. Confirm with change of character after the break. The breakthrough fair value gap should come with a structure shape. If there is no change of character after the break, wait, it may still be continuation. Step 4. Mark the inverse fair value gap, the original fair value gap zone. So the same zone that was a bullish fair value gap is now a bearish inverse fair value gap. Okay, it changed the direction. Remark it with opposite bias. This is your new entry model. So step 5. Enter when price retest the inverse fair value gap the other side. Price will often return to retest the broken fair value gap. When it touches the inverse fair value gap from the new side with rejection, enter. Okay. So inverse fair value gap sequence. Fair value gap marked, price breaks through, change of character, retest from other side is our entry. Okay.
So today's key takeaways: inverse fair value gap is fair value gap that failed and flipped to the opposite direction. Okay. So inverse fair value gap signals smart money has changed direction. High conviction fair value gap is continuation setup. Inverse fair value gap is reversal or shift setup. Okay. So must have change of character after fair value gap break before marking IFVG entry. Okay. So homework: open your chart, identify today's concept in real price action before tomorrow. फेयर वैल्यू गैप आपने तो मार्क किया होगा, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में। तो वही देखो मार्केट कैसा आता है, रिट्रेसमेंट लेके वापस उसको कंटिन्यू करता है, रिवर्सल देता है या फिर ऊपर जाता है। ठीक है, चेक दैट। ओके। So golden rule: inverse fair value gap is only a valid with a confirmed structure shift, change of character. Without it, just a broken fair value gap. So this was the today's video. अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला है तो प्लीज लाइक कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि डे 10 में ऑर्डर ब्लॉक्स, इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स ऑन योर चार्ट। ओके, सो हम ऑर्डर ब्लॉक्स देखेंगे, व्हाट आर द ऑर्डर ब्लॉक्स, हाउ दे वर्क। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।